Yes, but before that, we'll just discuss 2 points which are worth noting actually. Yes, it's about the graphs actually. ग्राफ्स के बारे में वैसे तो हमने बहुत सारा डिस्कशन किया है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में भी, बट 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। देखो ठीक से, तो सबसे पहला जो पॉइंट है तो वो ये है कि ग्राफ्स के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ होता है वो देखा था, because we know that the force is proportional to the displacement and hence the graph between force and displacement will be like a straight line and lying in the second and fourth quadrant, no doubt. Again, acceleration, we have that this acceleration is equal to minus omega square into x. So the graph between acceleration and displacement will again be the same thing like the straight line, but lying in the second and fourth quadrant like this, and having the slope omega square, minus omega square obviously. Okay, and here also the slope will be actually minus k actually, because f is equal to क्या होता है, minus kx होता है, right? Yes. Also the graph between yes, सिद्धि तुम्हारा भाई कौन है? Yes, if any doubt you can ask. Okay, तो चलो ठीक है भाई, जो बताया उसके बाद हम देखेंगे ग्राफ बिटवीन द वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एक्चुअली. देखो यहाँ पे वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में इक्वेशन क्या है, रिलेशनशिप क्या है, जैसा कि हम जानते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये रिलेशनशिप है वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, करेक्ट है? अभी इसको हम दो पार्ट्स में स्टडी करेंगे. सबसे पहला ये करेंगे कि ओमेगा इज गोइंग टू बी सपोज 1. ओके, इफ सपोज ओमेगा इज 1, then we can just reduce this equation as omega v is equal to root of a square minus x square. Simple thing. And if we just square on both sides, then we get this v square is equal to a square minus x square, right? And if we just transfer this x square in this other side, then we can be able to get that x square plus v square is equal to a square. This is the equation which gives us the relationship between this x and v here. And from this equation only we can get an idea that the graph between these the graph between x and v is going to be a circle, just because this equation resembles the equation of circle. ये जैसा कि हम तुमको पता है कि 11th स्टैंडर्ड में तुमको एक इक्वेशन ऑफ सर्कल था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. याद है सभी को? तो ये बात सामने रख के हम ये कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि द ग्राफ बिटवीन x, where x is plotted on x axis obviously and v is supposed to be plotted on y axis, then the graph between x and v will be just like a circle in this way. And as the particle goes on moving along this SHM, तो जैसे पार्टिकल SHM परफॉर्म करेगा तो देखो ठीक से x और v के जो वैल्यूज है तो वो they will take the coordinates of the point on the circle. मतलब every pair of x and v values will be a point on this circle. तो इस ये पॉइंट से ये पॉइंट ऐसे. तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो as we move from this point a suppose to the point b here, what will happen is x will go on decreasing, correct है, and v will go on increasing. We can also see from the diagram when the particle moves from the mean position to the extreme position, what happens is if suppose the particle starts from extreme position and goes on moving towards this mean position, तो यहाँ से यहाँ तक जब वो जाएगा पार्टिकल तो ये a पॉइंट है सपोज और ये b पॉइंट है, तो a से b तक जाने के टाइम तक क्या होता है, x goes on decreasing, करेक्ट है, x डिक्रीज होता जाता है और वेलोसिटी जो है तो वो बढ़ता जाता है and it becomes maximum at this point b here.
and again this on the after this point B here up to the point C, the velocity goes on decreasing and the displacement becomes negative and in the left side. तो मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ से जैसे ही वो सेंटर मीन पोजीशन क्रॉस करेगा तो डिस्प्लेसमेंट तो ऑब्वियसली नेगेटिव बनेगा कि नहीं, जरूर. तो डिस्प्लेसमेंट तो नेगेटिव बन गया, लेकिन वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है बी पे, बट एज इट गोज टुवर्ड्स सी द वेलोसिटी विल गो ऑन डिक्रीजिंग फर्दर. तो इस तरह से तो ये वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, नो डाउट. एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर सी up to this point D here is the displacement remains negative but goes on decreasing, and also the velocity becomes negative here. Velocity also becomes negative. The velocity reverses its direction at this point C here. So we can see तो C पे क्या होता है, velocity अपना direction reverse करता है and the particle starts moving towards B here and moves towards B. जैसे जैसे वो B की तरफ जाता है तो displacement magnitude में कम होता जाएगा, no doubt, और at the same time velocity जो है वो बढ़ता जाएगा, which can we see from this part CD here. And after the point D here, the displacement becomes positive. See here, after the particle crosses this mean position, the displacement will become positive and velocity will go on decreasing further in magnitude. It will remain negative but it will go on decreasing in this way. तो इस तरह से ये हम साइकिल देख सकते हैं पूरा. So in short बताने का मतलब क्या है यहाँ पे कि the velocity and displacement both of them can be plotted here in this graph. Okay, इस ग्राफ के अंदर ये हम प्लॉट किए हुए हैं. और उससे भी आगे जाके देखो, अगर सपोज यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू 0 के 1 के लिए हमने किया, अगर ओमेगा 1 नहीं है, if omega is not equal to 1, in general it may be anything, in that case we can get the graph between v and x to be like this. So v equal to omega root a square minus x square है, no doubt, ये तो हमको पता है. But if we just square on both sides, then we can get this v square is equal to omega square into a square minus x square, because square and square root will get cancelled. And if we just open this bracket, then we can get this v square is equal to omega square a square minus, here it is omega square x square, correct hai? And then we can just get this, if we just transfer this term once again in this other side, then we can be able to get that omega square x square plus v square is equal to omega square a square, right? And if just suppose we divide this whole thing, whole equation by a square omega square or omega square a square simply, तो हम ये देख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से हमने डिवाइड किया, तो इससे क्या बन गया रेकॉर्डिंग से, यहाँ पे तो चलो ये में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, नो डाउट. यहाँ पे सिर्फ ओमेगा कैंसिल होगा जरूर और यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होगा, बट हियर वी कैन सी क्लियरली दैट दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 1. We can just modify this as x square upon a square plus here it is v square upon, जैसा कि हमको पता है in case of the SHM the maximum velocity of the particle is nothing but a omega, correct है? So if we just put this a omega as vm, that is v max, that is maximum velocity of the particle here, then we get this as vm square and that is going to be actually equal to 1. So this equation very much resembles with the equation that is x square upon a square plus y square upon b square, that is equal to 1, which is the equation of ellipse, if you remember. Ellipse का equation है ये, and hence we can conclude here that the graph between x and v is going to be an ellipse in this case. So if suppose we draw an ellipse on this xy plane, तो अभी इलिप्स के बारे में कुछ बातें जो तुमको पता होनी जरूरी है, तो वो ये है कि उसका सेमी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं. तो इसमें यहाँ पे अभी अगर मेजर एक्सिस को अगर हम a मान लेते हैं, इक्वेशन ऑफ इलिप्स अगर ऐसा है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, तो मेजर एक्सिस होता है 2a, तो मतलब सेमी मेजर एक्सिस बनता है a, और माइनर एक्सिस मतलब ये पूरा होता है 2b, जिसकी वजह से यहाँ पे माइनर एक्सिस जो है सेमी माइनर एक्सिस, इट बिकम्स b actually. So and hence in this case the equation of ellipse is like this,
बट हियर इफ वी सी केयरफुली देन एक्स स्क्वायर के नीचे क्या है, ए स्क्वायर है, नो डाउट। तो इसलिए यहाँ पे उसका सेमी मेजर एक्सिस जो है वो तो ए ही रहेगा बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे देखो कि एक वी स्क्वायर के नीचे क्या है, वी एम स्क्वायर है। तो इसका मतलब यहाँ पे वाई एक्सिस पे जो बी होता है, सेमी माइनर एक्सिस जिसको हम बोलते हैं, तो उसके बदले यहाँ पे कौन आने वाला है, तो यहाँ पे वो वीएम आने वाला है। तो इसलिए उसको हम यहाँ पे वीएम बोल सकते हैं, एंड हेंस वी कैन गेट दिस वीएम हियर, राइट। एंड देन वी कैन जस्ट गेट दिस इलिप्स हियर इन दिस वे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमने डिस्प्लेसमेंट एक्स प्लॉट किया और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी प्लॉट किया। तो द ग्राफ बिटवीन x and v is going to be an ellipse in this case. It is not the circle always. Remember, the graph will be the circle only when this omega becomes equal to 1. Okay, but if omega is not equal to 1, then in that case the graph is going to be an ellipse, and this ellipse has a semi major axis which is equal to a, that is the amplitude of SHM, but its semi minor axis happens to be simply Vm, which happens to be the maximum value of velocity here. तो ग्राफ के ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चंस है तो वो हमको अच्छी तरह से करने आने चाहिए। तो अगर हमको ये पता है तो ठीक है ना, क्योंकि कभी कभी ग्राफ के ऊपर, प्योरली ग्राफ के ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल तुमको अगर ए का वैल्यू देके रखा है, मतलब सिर्फ ग्राफ के अंदर ऐसा ग्राफ दिया हुआ है कि द ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and the velocity of an SHM is given like this, and the distances here are given, मतलब the point where this graph cuts x axis is given here। तो यहाँ पे ये जो ग्राफ जो है वो कट x axis को कितने पॉइंट पे कट करता है, तो ये डिस्टेंस तुमको दिया हुआ है 10 सपोज, और एट द सेम टाइम ग्राफ यहाँ पे v वेलोसिटी एक्सिस को कौन सी पॉइंट पे कट करता है, तो वो भी दिया हुआ है, सपोज 8 is that, तो ये 8 दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पे ये 8 और 10 ये क्या है एक्चुअली, 10 is nothing but a here and Vm is nothing but 8 here, and actually we know that is Vm is nothing but a omega। Vm का फॉर्मूला देखा क्या है, a omega है। तो अगर उसके बदले हमने यहाँ पे डाल दिया उसको, तो यहाँ पे आएगा a omega that is equal to 8, and if we know a already as 10, then we can just put it here and get that 10 omega is equal to 8, which gives that omega is equal to 8 by 10, मतलब 4 by 5। And once we get omega, we know that period and frequency can be easily found out, because we have that period equal to 2 pi by omega and frequency n is equal to 2 pi n, no doubt। So in this way we can get the period as well as frequency once we get omega, remember। So in this way we can solve the questions based on the graphs in this way here, and even the graph between acceleration and velocity also has the same nature, remember। देखो अगर एक्सेलरेशन को अगर हमने क्या डिनोट करने का, कैपिटल ए से डिनोट करूं, देखो कैपिटल ए से मैं डिनोट कर रहा हूं एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, राइट। और वेलोसिटी का क्या है, तो वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट। okay, so if we suppose that omega is equal to 1, then we can say that both of these equations will get just modified. So a will actually become minus x and v will become root of a square minus x square, correct है। so that if you just put this x या x का जो वैल्यू है वो यहाँ पे अगर डाल देते हैं a करके, तो उसमें ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कैपिटल A स्क्वायर, एंड इफ वी जस्ट स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ओके, अगर स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ तो हमको मिलेगा v स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर, एंड इफ वी जस्ट सिंप्लीफाई दिस एंड टेक दिस a स्क्वायर इन दिस साइड, then we can get it as yes capital A square, or we can say simply v square plus capital A square is equal to small a square। Remember here that this capital A stands for the acceleration, okay। So this equation once again looks like the equation of a circle only, and since it is a circle we can draw the graph easily and get that the graph between the velocity and acceleration in case of an SHM
is also a circular one. तो ये सर्कुलर ग्राफ ही हमको मिलने वाला है इस केस में भी, बिल्कुल. तो इस तरह से ये हमको समझना है. एंड इफ सपोज दिस ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1, then it again will be an ellipse, and it can be proved that its equation of that ellipse will be v square upon vm square plus a square upon am square. अभी इसमें समझो इसमें ठीक से कि a मतलब क्या है. a मतलब acceleration. Okay, a stands for acceleration and am means the maximum acceleration. Okay, maximum acceleration in SHM, which is actually a omega square. If you know, then a omega square is the value of maximum acceleration. So in this case here we can see this is the equation of an ellipse once again, and here the equation the ellipse will be such that its major axis will be vm and minor axis will actually be am. Remember this ellipse here. तो इस टाइप का ellipse हमको ये मिलेगा जहाँ पे ये जो डिस्टेंस है तो वो कितना रहेगा एक्चुअली, ये vm के बराबर. तो ये vm यहाँ पे आ जाएगा और एट द सेम टाइम ये जो डिस्टेंस है माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस जिसको बोलते हैं, वो एक्चुअली am के बराबर रहेगा. ओके, so this will be am. And once again, if suppose this graph is given between acceleration and velocity, suppose this velocity and acceleration, इन दोनों के बीच में अगर ग्राफ दिया हुआ है and if it is elliptical like this, तो समझो ये ग्राफ अगर elliptical है इस तरह से और ये डिस्टेंस अगर तुमको दिया हुआ है या इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर दिए हुए हैं, suppose for example it is 20,0, okay, and suppose the coordinates of this another point here, यहाँ पे y axis पे जो पॉइंट है यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट्स अगर देखे रखे हैं 0,4 सपोज, ओके, 0,4, तो ऐसे केस में ये हम देख सकते हैं कि दिस डिस्टेंस विल बी टर्म्ड एज vm. सो दिस vm will actually be equal to 20, correct है, and this distance has to be called as am, that is the maximum acceleration, which is given actually to be 4, right? And hence we can just equate this vm as a omega, and this 4 is nothing but am, and am मतलब maximum acceleration जिसका formula क्या है, a omega square, correct है. So this is a omega square. And now if we just take the ratio of these two equations, तो यहाँ पे अगर ratio ले लेंगे तो इसमें से a omega cancel हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, 5 is equal to 1 upon omega, from which we can get omega is equal to 1 upon 5, and once we get omega we can get period and frequency by using the two formulae which we already have, that is 2 pi is equal to t equal to 2 pi by omega, and frequency n is equal to 2 pi into n. So here this is nothing but the about the graph between acceleration and velocity in case of the SHM, remember. So this is the about the graphs which we have to discuss about in this section. चलो ठीक है. So let us move to the new MCQs now. Yes, just try to read this. अभी कुछ MCQs जो है वो तो आपको सीधा orally मिल जाएंगे, orally उनका आंसर मिल जाएगा आराम से, no doubt. Yes, just read this question. Third, question number 3. A particle is in SHM, then the graph of acceleration and the displacement is, what should it be? Acceleration and displacement. अभी अभी हमने देखा, it should be the slope, straight line with the negative slope. So that is 3 is going to be actually the correct answer. Okay. चलो fourth वाला देखो एक बार ठीक से. A hole is bored along the diameter of Earth and a stone is dropped along it. The radius of Earth is r, and then the speed of the stone when it is at the center of Earth is. Let us try to find it out. See here, first of all we have to discuss this question in detail. First of all, hole is bored along the diameter of Earth. Question समझा ठीक से. एक hole हमने drill किया अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग और एक स्टोन वहां पे ड्रॉप कर दिया एक एंड पॉइंट पे. तो जब वो स्टोन
अंदर जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, तो उसका स्पीड जो है बढ़ता जाएगा, and its speed will become maximum when it will be at the center of the earth. And how much that speed will be, we have to find out. First of all, we'll just discuss about what happens when a hole is drilled along the diameter of earth. Suppose this is the okay, suppose this is earth and a hole is drilled along its diameter like this here. तो ये मान लो होल है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक होल गिरा दिया अर्थ के डायमीटर के अलॉन्ग इस तरह से, और यहाँ पे एक बॉल जो है वो हमने छोड़ दिया, ठीक है. as soon as we release a ball at this point here, this ball will just move towards the center because of the gravitational force acting on it. okay, तो इस तरफ वो जाएगा सेंटर की तरफ, no doubt. But what will be the force acting on it? Can you suggest how much will be the expression for force acting on this ball? Who can tell me? Obviously उसके वेट के बराबर है कि नहीं, तो उसके वेट के बराबर का फोर्स उसके ऊपर काम करेगा, no doubt. But as we know that the weight depends actually on the gravity, right? Acceleration due to gravity. Weight का फॉर्मूला क्या है? mg होता है, mg. So what happens is when it will move towards the center of earth here, inside the earth, तो यहाँ पे वो सपोज यहाँ से x इतने डिस्टेंस पे अगर है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो इसका मतलब वो यहाँ से अर्थ के सरफेस से कितना डिस्टेंस पे जाएगा, d इतने डेप्थ पे चला जाएगा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि नहीं? ये जो डिस्टेंस है इसको हम डेप्थ बोलते हैं, डेप्थ. और ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एज द डिस्टेंस ऑफ दैट बॉल at from the center at any instant. It will be variable. Both of these are variable. So when this ball will be at this point here, what is the gravitational force acting on it in the inward direction? It is gravitational force Fg is actually the m into gd here. Gd is going to be the acceleration due to gravity at the depth d below the earth's surface, and we already proved in gravitation last year in 11th standard that the expression for acceleration due to gravity at any point at a depth d below the earth's surface is given by the formula g into 1 minus d upon r. Correct hai? So if we use it here, then we can get this simplified as m into gd, where gd is nothing but g into 1 minus d upon r. And now if you just simplify this further, then we can get this simplified as, ये अगर LCM निकालेंगे ना इसको, तो ये हमको मिलेगा r minus d upon r. Correct है? And then also we can just still simplify this further as fg is equal to mg into, यहाँ पे आएगा r minus d. But we can see here that r minus d, what is it? If this whole thing is considered as r, and उसमें से अगर हमने d निकाल लिया, तो r minus d क्या बनता है? x बनता है कि नहीं? तो इसलिए इस r minus d के बदले हम क्या डाल सकते हैं? x डाल सकते हैं. So just put it here and it will be x upon capital R simply, so that we can get this simplified as mg, fg is equal to m into g the whole divided by r, and that is multiplied by x. Correct hai? So if we treat this as a constant, then we can see clearly that this fg is directly proportional to x, and at the same time minus sign will also be justified, just because whenever this force, whenever this particle will be at the left side or right side of this origin, तो x जब पॉजिटिव होगा तो उस समय फोर्स जो है वो इस तरफ काम कर रहा है, मतलब नेगेटिव है. And when this particle will just cross this mean position and just move towards this left side here, तो यहाँ पे जब ये पार्टिकल आएगा यहाँ पे, तो फोर्स कौन से डायरेक्शन में रहेगा? जरूर इस डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स द सेंटर, and that's why this force will always be towards mean position of this, and that's why it will be negative. तो नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा इसकी वजह से. एंड सिंस द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, इट प्रूव्स दैट द पार्टिकल विल ऑलवेज परफॉर्म SHM. तो द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल or stone dropped along the diameter of the earth will be actually be the
SHM, and this SHM will have a period which can be found out by using this acceleration. तो acceleration कितना होगा यहाँ पे, force divided by mass, तो ये बनेगा हमारा acceleration. So if we just put the value of force here, it will be negative. So if you put the value of force in the numerator here, that is minus mg upon r, that is multiplied by x, that is to be divided by mass, that is m here. Then mass gets cancelled, and what we are left with is acceleration is equal to minus g upon r, correct hai, into x. Yes, so if we just equate this equation with acceleration, the equation of acceleration in SHM, which is nothing but minus omega square into x, so we can be able to say that omega square in this case happens to be g upon r, right? And hence we can get that this omega square equal to g upon r, so omega becomes actually equal to root of g upon r, and hence we can say that the omega, once we get this omega, we can easily get the period of period of this oscillation, that is t equal to 2 pi by omega, right? And if we just put the value of omega here, then we can get this t equal to 2 pi upon root of g upon r. And if we just reciprocal this denominator, then we get this t equal to 2 pi root r by g, correct hai? So this is actually the formula for finding the period of oscillation of such a stone. Okay, and now once we get this period, so चलो ठीक है, पीरियड तो वैसे भी हमको निकालना नहीं था. क्वेश्चन का अगर रूप देखते हो ठीक से, याद करो क्वेश्चन क्या था. We will have to find out the velocity. Fourth question, read करो फिर ठीक से. So when the particle will reach at the center, the velocity of the particle we have to find out. But चलो जबकि बात निकल ही गई है, तो इसलिए मैंने ये सब पूरा आपको बता दिया, क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कभी यहाँ पे, ठीक है ना. तो इसलिए फिर अभी चलो वेलोसिटी निकालना है. तो वेलोसिटी एसएचएम के अंदर वेलोसिटी कितना होता है सेंटर पे, तो वेलोसिटी एट द सेंटर हैपेंस टू बी a इनटू ओमेगा, करेक्ट है. सो a मतलब क्या होता है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड, और ओमेगा मतलब एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमको यहाँ पे मिला हुआ है ऑलरेडी. दिस इज नथिंग बट द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्टोन. सो a मतलब एम्पलीट्यूड, विच इज एक्चुअली द रेडियस ऑफ दिस अर्थ हियर. तो ये जो पूरा है, दिस इज गोइंग टू बी द पाथ ऑफ एसएचएम. So half of that, that is this much here, will be the amplitude of SHM, which is nothing but the radius of Earth, right? And if we just replace this here, तो amplitude के बदले क्या आ जाएगा, radius of Earth, and omega के बदले जो हमने अभी derive किया, that is root of g upon r. So if we just simplify this and take this r in the inside, the square root sign, then we can get this root of r square g upon r. So that r gets cancelled once, and we are left with root of rg. This is going to be the maximum velocity of the particle. That means the velocity of the particle when it reaches at the center of Earth. Remember, yes. So it's root gr. So option B is going to be the, or option 2 is going to be the correct option. Yes. थर्टीन वाला देखो ठीक से. The equation of displacement of two particles making SHM are represented by y1 is equal to a sin omega t plus pi and y2 is equal to a cos omega t. Then the phase difference of the velocities of the two particles is, okay. So phase difference between the velocities. एक बात याद रखो कि phase difference आखिर वो displacements के बीच में का हो या velocities के बीच में का हो, it's going to be the same only. क्योंकि the velocity, displacement and acceleration in SHM always has a constant phase difference. ये बात याद रखो ठीक से, ठीक है, कि velocity, acceleration और displacement इन तीनों के बीच में एक constant phase difference हुआ करता है. So it is sufficient if you find out the phase difference between the displacements only. The same will be the phase difference between their velocities also. So let us copy these equations. y1 equal to a sin omega t plus phi, याद रखो ठीक से, और y2 is equal to a cos omega t only. Okay, so y1
is equal to a sine omega t plus phi, and y2 is equal to a cos omega t. Let us check whether these equations are correct. Yes, y1 equal to a sine omega t plus phi and y2 equal to a cos omega t. And what we want is the phase difference between the velocities. Yes. So let us try to find out the phase difference between these displacements itself. तो डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस y2 को चेंज करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा a sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, करेक्ट है, क्योंकि साइन कॉस ओमेगा टी मतलब ही क्या, cos omega t मतलब sin omega t plus pi by 2. Okay, and now if we just try to find out the phase difference between these two, तो इसका फेज कितना है, इनिशियल फेज अल्फा है, इसका इनिशियल फेज पाई बाय 2 है, तो द फेज डिफरेंस बिटवीन these two will be pi by 2 minus 5 or 5 minus pi by 2 anyways. And if we just try to find out the velocities, वैसे तो हमको आंसर मिल गया है, लेकिन फिर भी हम एक बार कंफर्म करेंगे कि वेलोसिटीज के बीच में फेज डिफरेंस उतना ही होता है कि नहीं. चेक करो, तो यहाँ पे dy1 by dt मतलब ये वेलोसिटी निकालेंगे फर्स्ट वाले पार्टिकल का, ठीक है. सो मतलब उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑब्वियसली. तो dy1 by dt कितना बनता है, तो a इंटू साइन का डेरिवेटिव cos, राइट, cos, और इसमें ओमेगा भी तो आने वाला है कि नहीं, तो ये बन गया a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5, करेक्ट है. Yes, and if we just try to find out the derivative of this y2 here with respect to time, then it will be actually minus of a omega sin omega t, right? Okay. So if you don't want this minus sign here, so what we have to do is we have to just push this minus sign inside, क्योंकि हमको पता है ऑलरेडी कि साइन के बारे में ऐसा होता है कि साइन ऑफ पाई प्लस थीटा इज एक्चुअली माइनस ऑफ साइन थीटा. ये बात याद है तुमको, क्योंकि अगर साइन पाई माइनस थीटा भी करेंगे तो भी वो साइन थीटा ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमको पाई प्लस थीटा करना पड़ेगा. तो अगर हम उसको करेंगे तो ये बन जाएगा a ओमेगा इंटू साइन, हियर इट विल बी पाई प्लस थीटा, मतलब ही वो बनेगा ओमेगा टी प्लस पाई, करेक्ट है. एंड इफ यू डोंट वांट कॉस हियर एंड वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से a ओमेगा इंटू कॉस थीटा मतलब क्या होता है, साइन 90 प्लस थीटा होता है. तो इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा मतलब ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई बाय 2, राइट. And hence if we see carefully, then omega t is a constant here also and here also. But what is the phase difference, तो यहाँ पे ये जो पूरा वैल्यू है तो वो हम as it is कॉपी करेंगे यहाँ पे, it is the initial phase of this velocity of the first particle and this is nothing but the initial phase of the second particle. So minus pi करेंगे क्योंकि डिफरेंस निकालना है ना हमको, तो इसलिए इसमें से अगर ये माइनस कर दो तो हमको मिलेगा phi माइनस 5 प्लस पाई बाय 2 माइनस पाई, मतलब ये 5 माइनस पाई बाय 2, करेक्ट है. सो 5 माइनस पाई बाय 2, वही तो मैंने बोला ना कि 5 बाय पाई बाय 2 माइनस 5 या तो 5 माइनस पाई बाय 2, दोनों में से कोई भी आंसर करेक्ट है. सो 5 माइनस पाई बाय 2 इज प्रेजेंट देयर इन दिस ऑप्शन 4, करेक्ट है. सो दिस फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन एक्चुअली. Let us try the 16th one. At time t equal to 0, the displacement of the particle is half of its amplitude. Then its initial phase will be pi by 6 radian. Just check. At time t equal to 0, the displacement is going to be half of its amplitude, means half of a. We have that x is equal to a sin omega t plus phi, correct है. तो अगर हमने यहाँ पे t के बदले 0 डाल दिया और x के बदले अगर a by 2 डाल दिया तो यहाँ पे मिलेगा हमको a by 2 is equal to a sin ओमेगा t, तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 5 मतलब ये sin 5 simply, okay, because omega t is going to become 0. So here this will be
साइन फाइव, ए कैंसिल हो जाएगा और हमको मिलेगा साइन फाइव इज इक्वल टू हाफ, करेक्ट, एंड साइन फाइव इक्वल टू हाफ गिव्स फाइव इज इक्वल टू पाई बाय 6, दैट इज 30 डिग्री, मतलब ये पाई बाय 6 रेडियन। Here this is going to be actually the correct answer. The first option will be the correct here. Yes. Let us try this 26th question orally. The pendulum bob is in SHM. The velocity of bob is in the mean position is V. Okay. If now the amplitude of oscillation is doubled and the length of pendulum is also doubled, then the speed of the bob in the mean position would be. Yes, अभी देखो एक बात ठीक से कि एम्पलीट्यूड को डबल करने से और लेंथ को डबल करने से स्पीड स्पीड एट द मीन पोजीशन, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। एक बात सुनो कि तुमको पता होगा कि पेंडुलम के बारे में हमने ऑलरेडी ये प्रूव करके रखा है कि ओमेगा जो होता है उसका, तो ओमेगा एक्चुअली रूट जी बाय एल होता है। याद है ये बात? अगर नहीं पता तो ये लिख के लो और ये याद करके रखो ओमेगा, और तुम निकाल भी सकते हो ऑन द स्पॉट कभी भी, क्योंकि पीरियड का फॉर्मूला क्या है उसका, पेंडुलम का पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट एल बाई जी है ना। तो एक्चुअली ये आता ही कहाँ से है, एक्चुअली टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा होता है कि नहीं। तो ये ओमेगा का वैल्यू जो है वो रेसिप्रोकल होके ये बनता है। तो ओमेगा कितना होना चाहिए फिर, ऑब्वियसली ओमेगा शुड बी रूट ऑफ g by l and then only it will become root of l by g when reciprocal, right? So चलो ठीक है, ओमेगा का वैल्यू जो है वो रूट ऑफ जी बाई एल होता है, ये पता रखो, ठीक है। अभी एक सोचो कि अगर ये पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है तो उसके मीन पोजीशन पे वेलोसिटी कितना मिलेगा, उसको हम बोलते हैं वी मैक्स। उसका फॉर्मूला है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा, करेक्ट है, एंड दिस एम्पलीट्यूड इज रिप्लेस्ड बाय ए ओनली, बट ओमेगा हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय रूट जी बाय एल, करेक्ट है। ये हो गया हमारा फॉर्मूला वी मैक्स के लिए। अभी फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्या बताया जा रहा है कि एम्पलीट्यूड इज डबल्ड एंड लेंथ ऑफ पेंडुलम इज आल्सो डबल्ड। तो मतलब क्या किया हमने, देखो ठीक से यहाँ पे इस एम्पलीट्यूड को हमने 2 टाइम्स कर दिया और इस लेंथ को भी 2 टाइम्स कर दिया, तो वेलोसिटी का क्या होगा, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होगा। देखो ठीक से velocity will become v dash will become 1 upon 2 into 1 upon root 2 times of v। ये टेक्निक है, इसको सीखो ठीक से। कैसा है ये 2 into 1 upon root 2। देखो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये जो एम्पलीट्यूड है उसके बदले ही हमने 2 डाल दिया, देखो ठीक से, और g के बदले तो कुछ डाला नहीं क्योंकि g कांस्टेंट है, g को कुछ किया ही नहीं उन्होंने, g को डबल भी नहीं किया और हाफ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, तो इट्स गोइंग टू बी कांस्टेंट, सो इट विल नॉट अपीयर इन द एक्सप्रेशन हियर। एंड यहाँ पे l को हमने डबल किया तो l के बदले ही हमको 2 डालना है, लेकिन रूट को वैसे ही रखना है। तो अगर g के बदले 1 डाल दिया तो रूट ऑफ 1 अपॉन 2 आएगा, जिसको हम 1 अपॉन रूट 2 लिख सकते हैं आराम से। दैट मींस द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी विल बिकम 2 into 1 upon root 2 times of original velocity v here, which will actually be root of 2 into v, which is going to be the correct option, which is already there in this option 2 here, correct है, in this way। Okay, so let us try this 29th question. The percentage change in the time period of seconds pendulum when its amplitude is reduced by 30%. Okay, so देखो ठीक से उसका एम्पलीट्यूड हमने रिड्यूस किया 30% से। अच्छा, एम्पलीट्यूड को अगर हम रिड्यूस करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी तो नहीं, बिकॉज एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड ही तो नहीं करता है पीरियड, बताया था कि नहीं। Time period of the seconds pendulum doesn't depend on the amplitude of simple pendulum। Okay, तो ये बात सामने रखो। तो इसका एक ओरल क्वेश्चन, ओरल आंसर हो गया उसका, तो it will be 0%। 2 is going to be the correct option। Okay,
31st वाला देखो ठीक से, क्वेश्चन नंबर 31st. If the simple pendulum of length L is performing SHM with the maximum amplitude angular displacement theta. Okay, so theta is the maximum angular displacement of the pendulum. If the mass of bob is m, then the maximum kinetic energy at its mean position is. Yes, so we want to find out the maximum kinetic energy when it will be at the mean position. Whereas its maximum displacement is given, angular displacement is given to be theta here. तो ये angle theta है. तो कितना velocity उसका बनेगा maximum when it will be at the mean position here. So इसमें भी हमको simply law of conservation of energy use करना है. देखो जब ये यहाँ पे जाएगा तो उस समय कितने हाइट पे जाएगा वो हाइट हमको निकालना है पहले. तो ये सपोज हाइट मान लेते हैं. 2 मिनट के लिए ऐसा करते हैं, थीटा को थोड़ा ज्यादा लेते हैं फॉर जस्ट सेक ऑफ कन्वीनियंस. ओके, ये थोड़ा ज्यादा ले लिया हमने थीटा. और फिर यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप हो जाएगा और ये बनेगा हमारा हाइट ऑफ द पेंडुलम फ्रॉम द लोएस्ट पॉइंट हियर. ओके, तो अभी जब लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एल है और ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा. ये भी तो वर्टिकल जो डिस्टेंस है यहाँ पे ये वाला, ये भी तो एल होगा कि नहीं. जरूर. तो उसमें से अगर हमने एच हटा दिया तो ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना बनेगा. एक्चुअली वी कैन कॉल इट एज एल माइनस एच. करेक्ट है. तो दिस विल बी एल माइनस एच, नो डाउट. एंड इफ वी कंसिडर दिस cos थीटा in this triangle here, then we can get this cos theta is actually equal to L minus H upon L. Correct है. So that we can get that L minus H is going to be H into cos theta, from which we can get that L is equal to H plus H cos theta. Correct है. And if we take this H common, then we can get that L is equal to H into 1 plus cos theta. Okay, so H can be actually found out to be equal to L upon 1 plus cos theta. But why we are finding H? Because we want to use the law of conservation of energy. What is law of conservation of energy tells us? When the ball just will fall down here from this point to this point here, it will lose the potential energy. How much potential energy it already has? It is mgh, as we know that, and it will get converted into the kinetic energy, and that is we have to find out ना. तो kinetic energy हमको निकालना है. तो यहाँ का जो potential energy है वही उसका इधर का kinetic energy बनने वाला है. So what will be potential energy at this point here? It will be mg into h, where h is nothing but given by this formula which we have just already derived. तो वो यहाँ पे आ जाएगा h will be equal to L upon 1 plus cos theta. ओके, बट अभी यहाँ पे ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या हमारे पास? जस्ट चेक करो. नो, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ sin theta and cos theta. चलो ठीक है. So let us try once more. ओके, तो we have made a mistake, isn't it? यहाँ पे हमने मिस्टेक किया. ये L है, H थोड़ी ना है. तो वो जब उस तरफ जाएगा, ये L जब उस तरफ जाएगा तो
तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, L minus H equal to L cos theta आएगा ना, and if you just shuffle these terms, L cos theta is transferred that side and H is transferred in that side, तो हमको मिलेगा L minus L cos theta is equal to H, right? So you can say that H is equal to, if we take L common, then we can get is L into 1 minus cos theta, and this value of H is to be put here so that we get it as mg as it is into H के बदले आएगा L into 1 minus cos theta, which is already there in option 4 here. Okay, चलो ठीक है. So we have completed this MCQs for today's portion. Let us see the next MCQs. इसके अंदर बहुत सारे MCQs है ऑलरेडी. ये फाइल मैं आपको शेयर करता हूँ, आज ऐप में डाल देता हूँ, और एक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए. Just wait.